हर साल हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करते हैं और जब इसकी आखिरी डेट पास आने लगती है तो हर कोई घबरा जाता है कि भाई कैसे फाइल करें। अब पहले जैसा प्रोसेस नहीं रहा है, आप आसानी से ऑनलाइन जाकर अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो आपको बताते हैं एक आसान तरीका जिससे कि आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। How you can file the return of income online. So first of all, it's a very simple process. All you need to do is go to the official website www.incometax.gov.in for e-filing the return of income. Then you have to log into e-filing portal by entering user ID, that is your PAN, then your password, captcha code, and then simply click on the login button. After that, click on the e-file menu and click income tax return link. So on the income tax return page, PAN will be auto-populated. Then what you need to do is that you need to select the assessment here, then select ITR form number and select filing type as original, revised return, and then all you need to do is select the submission mode as prepare and submit online. And then simply continue. And then although read all the instructions carefully and fill all the applicable and mandatory fields of the online ITR form. And then choose the appropriate verification option in the taxes paid and verification tab. Then click on preview and submit button. Verify all the data entered in the ITR. Make sure that you double cross check before submitting the ITR. And then you're finally done. So what are you waiting for? Just file your income tax return before online to avoid any kind of late fees. तो ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसको आप फॉलो करके आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो ऑनलाइन आप फाइल कर सकते हैं। हालांकि फाइल करने के पहले कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं जो आपको इकट्ठे करने चाहिए, तो हम आपको अब कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे कि आप जब भी फाइल करने जाएं उन टिप्स को जरूर जो है फॉलो करें। So first of all, always collect and collate the documents related to various income sources. Then avoid mistakes while reporting income or deductions in ITR, and most importantly, carefully verify all the forms and then compute income tax liability as per the new or the old regime. And lastly, pay income tax dues before filing your income tax return.